Hello, good afternoon, everyone. So have you tried to solve the particular problem which I gave you yesterday? The Excel sheet, problem 1. Yes. Sarthak, Dharna, have you tried that problem out? Please try to do it. Let us take this problem from scratch and let us solve it. Okay. I'm opening a new sheet. I'm just pasting the data over here and suppose we need to forecast the data up to 2010. We want to find out the forecast for this year, 10 years in advance.
The first thing what we should do is insert a column in between and write it as period and X. And then this is the first period, then second period, third period, and so forth, so on. And we will move to 2000. So that means from 2000 onwards till 2010, we need to forecast for the 20th period also, right? Up to 20th period forecast, we need to take. Now in this case, the first step, as I told you, is to prepare a particular graph. So I am selecting this data, then going to insert, and in insert, I am selecting this particular XY graph. So by seeing this, I can estimate that, okay, particular this graph only has a trend, and I have to detect the trend, and it will be an additive model. So I can solve it through the process of least squares. Okay. So how to again predict? So we'll go to data. After going to data, please let me know if I am talking too fast. Can you guys view my screen? Yes, sir. Okay. Now, once we are through with this, then we will go to data. Under data, we need to click on data analysis. In data analysis, there is a particular option called regression, and click on OK. Now, what is Y here? Over here, we want to predict population, right? So we will be selecting first Y. Then using the tab button, we will be going to the other particular cell. And then the input range. Here, input is nothing but time. But see, on the first row, I have named this column as period X, and the next column C as populations of France in millions. So I have to tick on these levels also, because Excel only can take into account these numerical figures. It cannot interpret any text. So that's why I have to also indicate or tick mark this level checkbox. Once I am done with this, what I require over here is the residuals. So I will click on the residuals and I will click on OK. Once you click on OK, a new sheet will again appear in front of you. Once you double click it or select the whole sheet and double click on any of the columns, then all these values will be shown in detail. Okay. But if you don't want these or see these up to 4 decimal or 7 decimal places, you can go to home and simply click a comma style button. Okay. Just click on this comma style button and all figures will be converted into 2 decimal places only. Okay. Now I think this data is much more user friendly, and we can go ahead with our analysis. Now see that here the intercept is coming to, which we known as alpha. Okay, or you can denote it as small a, that is coming to 46.13. And whereas the beta coefficient, which we know as B, is coming to 0.48. And we know that any equation can be written in the form of A plus Bx, correct? So here we can obtain the predicted values using these particular values of A and B. So let me just correct it and write it as Y hat. We can calculate Y hat using this A and B. Now, how we can do that? Let's just take the value of A over here, somewhere here, and B over here. So A is equals to this value, and similarly B is equals to 0.48, correct? These are the values of A and B. I hope
Everybody is on the same page? Are we on the same page? Hello? Yes, sir. Now here Yes, sir. we will be computing y hat, that is the predicted value. Now, how to compute the predicted value? As I told you the formula that the predicted value can be calculated as A plus B star X. Okay. So now A is 46.13. I am just fixing the value, plus B is 0.48 multiplied by this xi, that is the period 1. Once we do that, we will get the values. And over here, we are also getting the predicted value for the year 2010. So it is 55.74 million. This is our prediction, correct? But let's see that whether we have any discrepancy in this prediction or not. Now, in order to do that, the first thing what we should calculate is error, which we generally term it as EI, which again can be computed as yi minus y hat I, which is equals to the original, the actual value minus the predicted value. Is it clear? Which is equals to actual minus predicted. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. So once we drag these values, we will get the error. Okay. Now, if we sum this, we will get the value of what? Bias. Okay. Which is also known as sum of error. So this particular value will be termed as bias or sum of error. Then if you look into the slide, then there is another thing what we call it as mean absolute error. Another matrix what we find is mean absolute error. Now how to calculate mean absolute error? Let us understand that. Mean absolute error. In order to calculate mean absolute error, you need to use a formula called ABS. ABS of these error. So here ABS of this particular value and hit enter. Now from a negative value, it has changed into a positive value. Now if you conduct the sum, it will be something else. It is 1.84303. Can you see this figure? Everyone, can you observe this figure? Or can you repeat how you did this absolute error? Yeah. I have used a formula called ABS. ABS is the function which we use to convert any negative value into positive value or absolute value. Okay. So Okay, I sir. have used a function called ABS in order to generate the absolute values or positive values. Correct. So this value 1.84303, it will be termed as sum of
absolute error. Is it clear? And then Yes, sir. we can calculate mean of absolute error, which is acronymed as MAE, which is equals to how much? This value divided by count of how many observations are there. I think 10 observations are there. So this is becoming MAE. Is it clear? Is it clear? Mean absolute error or mean of absolute error. Is it clear? Is it clear, everyone? Yes, sir. Now, once we are through with this, I'm just converting it into small rooms. Once we are done is this, next formula is sum of square errors. And then we need to calculate mean of square errors. Okay. So how to determine sum of square errors? Let us understand. Sum of square errors. This will be equal to the EI what we have calculated, just we need to square that. Correct. First is we need to calculate square of errors and then we need to sum it. So here this particular error to the power of 2. Once we do that, we will get square of errors. And if we drag it, we will get all the values. And then here might be, let me insert one. I'm just shifting this value so that I can compute over here. Alt equal to, and I have summed it out. So this 0.46 will be told as SSE, that is sum of squared errors. Okay. And then another measure called MSE is known as mean squared error. It will be defined as sum of square errors divided by again the count of number of observations. Here the count of number of observations is 10. So this is your mean square error. Is it clear? Is it clear? Hello? Is it clear? Yes, sir, clear. Yes, sir. Now, once we are through with this, next is degrees of freedom. Now, degrees of freedom is always measured as n-1. And next, there is another particular very important measure called MAD, that is mean of absolute deviations. First, we need to calculate absolute deviations and then sum of absolute deviations, and then after MAD, that is mean of absolute deviations. Okay, so let us do one by one. So let us compute first absolute deviations. Okay, which we also know as AD. This is equals to, what is this absolute deviation?
it is again the mean what we have calculated. Let me show you the formula. Yi minus y bar, that means the mean of the actual data and their absolute values. So first we need to generate the mean value from this actual data. So what formula we can write? Average of these values, and we have got the mean. Let me highlight it in red. So finally here I will put the formula ABS, absolute value of what? The actual value minus this mean value, and I need to freeze this value. Why? Because every time I have to deduct the actual value through this mean value. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Please do it side by side, otherwise you will forget. Are we on the same page? Yes, sir. So जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करोगे या ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका सारा वैल्यूज आ जाएगा, एब्सोल्यूट डिविएशंस आ गया। अब एब्सोल्यूट डिविएशंस जैसे ही आ गया, अब इसे आप टोटल कर लो तो तब आपके पास क्या आ गया? सैड आ गया, दैट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस। एंड उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? मैड इज इक्वल्स टू व्हाट? सैड डिवाइडेड बाय क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? Count. है मीन एवरेज डिविएशन क्या होगा? सैड डिवाइडेड बाय एन, यही तो है फॉर्मूला। देखो, मैड इज इक्वल टू व्हाट? सैड डिवाइडेड बाय एन। यस और नो? Yes, sir. So this value divided by, again count, how many observations are there? I think 10 observations are there. Yes, 10 observations are there and I got my MAD value. ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है? मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस, MSD। सॉरी, एक मैंने स्किप कर दिया था, सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस। नाउ sum of square deviation, SSD, is equal to sum of squared deviations, which is equal to what? आपको जो एब्सोल्यूट डिविएशन आपको मिला है उसको आपको जस्ट स्क्वायर करना पड़ेगा पहले एंड उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो सॉरी, पहले Excuse me, sir. सर जो हम ये मेजर्स लगा रहे हैं, हाँ जी इनका मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है वैसे? बता रहा हूँ उसका मतलब लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कि क्यों हम लोग ये सारे कंप्यूट कर रहे हैं। मैं जानता था कि ये क्वेश्चन आएगा। सो इक्वल्स टू, अभी करते जाओ, ये जो एब्सोल्यूट डिविएशन है, इस एब्सोल्यूट डिविएशन को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ला रहा हूँ टोटल मेरा। अब मैं ऑल्ट इक्वल टू सम कर दूंगा तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस आ गया आपके पास एंड फाइनली आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर आएगा, MSE, if I am not wrong, MSD, sorry, MSD, mean of square deviations, mean of square deviations, okay, which will be equals to 19.50 divided by, again, count of these observations.
again we have got a measure mean of square deviations. एंड लास्ट एक और मेजर है जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस. वेरिएंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? SSD डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो SSD देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कैलकुलेटेड है, तो लेट अस कैलकुलेट नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था मेरा? काउंट मतलब जितना ऑब्जर्वेशंस है, whatever is my total number of observations minus 1. So 9 is what? D dot F, degrees of freedom. So finally अगर मैं वेरिएंस निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एज पर द वेरिएंस फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या? SSD डिवाइडेड बाय D dot F, that is degrees of freedom. So here 19.50 divided by 9 will give me the variance. Correct? अच्छा, ये तो हमने वेरिएंस तो निकाल लिया, बट इसको एक बार चेक भी करना जरूरी है कि वेरिएंस हमारा सही आ रहा है या गलत. तो एक्सेल में एक इनबिल्ट फॉर्मूला है वेरिएंस. सो वेरिएंस ऑफ सैंपल हम लेंगे var.s एंड हम इस नंबर्स के वेरिएंस निकाल के एक बार चेक कर लेंगे कि वेरिएंस एक्चुअली में इतना आ रहा है कि नहीं. बट मैंने देखा कि कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ, और एक बार कर लेते हैं. फोर पॉइंट 7614. ओ सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा गलती है. हमको ऑब्जर्वेशंस लेने हैं तो फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट हमें सिलेक्ट डिविएशन को करना पड़ेगा. एंड नाउ आई थिंक स्टिल इट इज रॉन्ग. सो देयर इज सम प्रॉब्लम. लेट अस गो फर्दर एंड लेट अस चेक. नेक्स्ट एक और चीज हम करते हैं, दैट इज नोन एज RMSE, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ MSD. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है RMSE, which is equals to SQRT, square root of this value MSD 1.39. अब आते हैं कुछ सवालों पे कि अच्छा सर आपने तो अच्छा वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है दैट इज SD, तो आप यहां से स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हो, which is equals to SQRT of variance, right? 1.472248. करेक्ट, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया. अब सवाल किसी ने मुझे ये किया था कि सर इतने सारे मेजर्स हमारा किस काम का है, हम क्यों ये सारा चीज कैलकुलेट किए हैं? हम तो सीधे सीधे जानते थे कि हमारे पास बायस है. चलो लिख लेते हैं एक बार प्रॉपर तरीके से. बायस है, बायस विच इज इक्वल्स टू इस पर्टिकुलर इसमें 0 आया है. फिर उसके बाद क्या था? मीन एब्सोल्यूट डिविएशन एक मेजर था जो मेरा 0.184 समथिंग. इसे सारे चीजों को मैं 2 डेसिमल प्लेसेस में कर रहा हूं ताकि मैं एनालाइज करना मेरे लिए आसान हो जाए. देन MSE बोल के एक मेजर था जो 0.5 था. फिर MAD बोल के एक मेजर था जिसका वैल्यू है 1.164. इसे भी 2 डेसिमल प्लेसेस में कर लेते हैं. नेक्स्ट MSD बोल के एक मेजर था जो मेरा 1.95 समथिंग था. एंड कुछ और वैल्यूज थे जहां पे वैर था, वेरिएंस 2.167. नेक्स्ट RMAC था
जो 1.39 था, एंड लास्ट मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन था विच वाज 1.47। तो यहाँ पे क्या आप जब देख रहे हो कि ये जो बायस का ये एक मेजर है, राइट, एंड ये जो सारे वेरिएंस रिलेटेड मेजर्स हैं, जैसे जहां पे ही आपने मीन से डिविएशंस निकालना शुरू कर दिया अप टू एमएससी तक, ये सारे बायस मेजर्स हैं, और एमएडी से लेके एसडी तक ये सारे क्या वेरिएंस मेजर्स हैं। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? हेलो? Yes, sir. अब प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार एग्जाम में शायद मैं बायस ना देके आपको एमएससी और इसमें से कोई एक वैल्यू मैं दे दूं और देके बोलूं कि मॉडल कौन सा बेटर है अमॉन्ग दिस 5 मॉडल्स, कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लॉट बनाना पड़ेगा कि सपोज हमारे पास एक मॉडल ए है और एक मॉडल बी है, राइट, एंड इसमें अगेन बायस आया है 0.002, सपोज यहाँ पे मैं कुछ फिक्टिशियस वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, 0.02 फिर 1.19 या थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 2.24 कर देते हैं, इसे 2.23 करते हैं, इसे 2.6 करते हैं, इसे नियर बाई टू 1.95 करते हैं, इसे भी 1.96 कर देते हैं, राइट। तो ये दो मॉडल्स क्या आपके पास है। एंड मान लो कि आपने एमएस सेमी को लिया, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, और यहाँ पे आरएमएससी को लिया, इन दोनों चीज को लेके आप क्या एक कंपैरिजन करना चाहते हो। तो बताओ इसे देख के कि कौन सा मॉडल बेटर है, ए बेटर है या बी बेटर है। यस, विच मॉडल इज बेटर, ए इज बेटर और बी इज बेटर। These are the measures of, as I have told, bias, okay, and these are the measures for variance. Then tell me that which model is good over here, model A or model B? हाँ जी बताइए। बोलो। अरे यही मेन है, Sir, A. कैलकुलेशंस तो कोई भी कर लेगा, मेन इंटरप्रिटेशन है। Sir, A. ए क्यों? Sir, Because because bias इसमें and variance. हाँ? bias and standard deviation is the least. क्यों? बी का एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, बी में भी तो बायस लो है, वेरिएंस थोड़ा सा हाई है ना? But sir, A में margins कम है, तो फिर हमें ज़्यादा accuracy मिलेगी मॉडल। बी का भी तो देखो। और अच्छा, तुम बाकी मेजर से भी कंपेयर कर रहे हो, ओके। तो यहां से हमें एक चीज पता चल जाता है कि मॉडल ए में बायस एंड वेरिएंस दोनों ही कंपैरेटिवली लो है, करेक्ट, एंड बी में सिंस वेरिएंस पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आपको एक चीज बताना चाहिए था मुझे, चेंज कितना है फ्रॉम मॉडल ए टू मॉडल बी। इसी से तो हम देखेंगे ना, इवेल्युएट करेंगे सारे पैरामीटर्स को। तो यहाँ पे बायस में कितना चेंज है, 0.3 का चेंज है, यहाँ पे कितना चेंज है, 0.55 का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि
हमारा इस वेरिएंस में बहुत ज्यादा अंतर है, उसके वजह से हम क्या मॉडल ए को सिलेक्ट कर रहे हैं rather देन मॉडल बी. Is it okay? Is it okay? Hello? Yes, sir. Should I repeat it again? No, sir. ये है मेन मुद्दा. नाउ एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करो उसे, एंड करने के बाद फिर मुझे रिजल्ट्स सबका मैं एक्सेल शीट चेक करूंगा. ठीक है? आई एम सेंडिंग यू द प्रॉब्लम. Yes, kindly check that whether you have received it or not. Kindly check whether you have received this numerical or not. And there is a small typo, please correct it. The table below shows the demand for a particular brand of razor in a shop for each of the last 10 years. Just make that correction when you download the file. Please do it. Please do it and submit me before 1:30. Okay? Next day, we will do some forecasting on R Studio as well. Okay? Please install the software R Studio and we will practice some numericals on R Studio, that how to do forecasting on R Studio. Is it okay? And please download 2 softwares which are necessary for R. Number A is the R software itself. From CRAN R, just type in Google. And another is R Studio. Okay. Please download these 2 softwares and then we will have an hands-on experience on R Studio. Is it clear? आज ही इनफैक्ट कर लो ये काम.
ये जो न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, साथ साथ डाउनलोड पे लगा दो, दिखा देता हूं कि कैसे करना है। जस्ट यहाँ पे लिखिए क्रैन आर डाउनलोड, क्रैन डाउनलोड आर या क्रैन आर, कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। दिख रहा है लिंक? कैन यू सी द लिंक? सो जो लेटेस्ट वर्जन है R 4.1.2, this you can download R 4.1.2 for Windows. Just click it and you can download it, right? Similarly, open another window and just write R Studio, download for Windows or download for Mac, whatever you feel like, and you can download it. Now see R Studio, it will direct, this link will directly direct you for downloading the R Studio. So here you need to download the free version. So just click on download, okay, and automatically your download will start. Is it okay? I think Dharna knows how to download and how to install the software. I hope Ms. Gupta, you have done it already. Yes, sir. I have done. So please help your friends as well. Now, nobody asked me a question that why these three measures are measures of bias and why all these five measures are measures of variance. Nobody asked me this question. The reason is, see, these bias, MED and MSE all are based on the actual value minus predicted value.